Hi guys. So today we're going to discuss one of the most dreaded topics or one of the most dreaded sections we can say. The section जिसमें हम सबसे कम score कर पा रहे हैं. A lot of us have this problem. So which is critical reasoning, right? So under the new pattern, the CLED consortium expects us to think like a lawyer. So उन्होंने logical reasoning section को पूरा critical reasoning कर दिया है. Okay, so critical reasoning पहले भी पूछा जाता था, but not that much particularly in CLAT or ALET. So in 2011, I remember that all the questions in the reasoning section were from critical reasoning. In 2015, maybe the paper that I took, उसमें भी बहुत सारे questions आए थे, but generally they do not ask a lot of questions on critical reasoning. But अब से all the questions will be in the form of passages, and we are expected to read between the lines, and there are certain kinds of questions that are asked that we'll discuss in this session. Okay, so they want you to think like a lawyer. So basically, I don't personally agree with it also, because अभी आपको चलना ही नहीं आया, they can't expect you to run, right? But anyway, we cannot do much about it. This is in the course, and we have to understand as to how to solve these questions in the least possible time. Because something that every CLAD aspirant or every ALET aspirant या कोई भी law entrance exam के aspirant है उसको समझने की जरूरत है, that it's not about the number of questions you solve correctly. It's about the time you take to solve those questions. Okay, that matters a lot because we have limited amount of time for every question that we do. सो अब टेक्निक क्या होनी चाहिए जिससे टाइम भी कम लगे और ज्यादातर आंसर्स भी सही आ जाए. दैट इज समथिंग वी आर गोना डिस्कस टुडे. ओके, सो देयर आर मोस्टली 4 or 5 kinds of questions that are asked in critical reasoning. The first most prevalent question is the questions on weakening and strengthening arguments. Okay, so इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा. सो whenever you attempt a question on critical reasoning, so there are 3 parts of it, right? जो नया जो पैटर्न आया है इसमें हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. So there is a passage, then there is a question. पैसेज को हम स्टिमुलस भी बोलते हैं. Then there is a question stem. उसके बाद में there are 4 options. Okay, so there are 3 parts of it. My advice to you would be to start with the question, basically the second part. ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, you will get a fair idea as to what the question expects from you. फिर जब आप पैसेज पढ़ने जाओगे, so that will save time और आप पैसेज के relevant parts को पढ़ सकते हो. एंड उसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है, दैट इज रीडिंग द पैसेज फर्स्ट एंड देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, उसमें एक फ्लॉ ये है दैट व्हेन वी रीड द पैसेज एंड व्हेन वी रीच द क्वेश्चंस पहुंचते हम पैसेज के मेन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. एंड दैट इज वेरी नेचुरल ऑल्सो, क्योंकि पैसेज काफी बड़ा होता है और इट्स नेचुरल दैट वी फॉरगेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स देयर. फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के वी मूव बैक टू द पैसेज. सो जो पहले हमने पैसेज पढ़ा था वो टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, बिकॉज हम फिर से पैसेज पढ़ना ही पड़ता है. सो टू save that time to do all the questions efficiently in least possible amount of time, it's very important to read the question first and then move on to the passage. इसके बाद में there are mostly 4 kinds of questions. पहला मैंने बताया strengthening और weakening argument. strengthening और weakening सबसे ज्यादा prevalent question है. ठीक है, इसमें basically you're given an additional piece of information. basically आपको जो passage में जो main theme है या फिर जो भी conclusion है या author की कोई opinion है, उसके बेसिस पे you will be given an additional piece of information and you will be expected to tell them कि ये जो additional information है ये strengthen करेगी argument को, ये weaken करेगी, और basically जो आपको 4 options दिए हुए इसमें से कौन सा option सबसे ज्यादा strengthen करेगा. इसके लिए सबसे important क्या है समझना is the central theme or the opinion of the author. अगर आपको वो समझ में आ गया, then strengthening and weakening becomes very easy. Okay, weakening भी it's exactly the opposite of what strengthening is. ठीक है, I'll give you a very simple example. It's a hypothetical example. Say your passage is about कि जो अभी migrant laborers का issue हुआ था. ठीक है, so migrant laborers, a lot of migrant laborers were actually stranded, and because they had no jobs lockdown की वजह से, and they were walking to their houses. They had to walk for hundreds of kilometers. इस वजह से the government was criticized a lot. मान लो इस पे passage है, and the question is on which part or which option actually weakens the argument. ठीक है, तो उसमें the suggestion that the author gives in the passage is कि 1 हफ्ता देना चाहिए था सबको घर जाने के लिए, but in the option it's given, say hypothetically 2007 में भी एक ऐसा pandemic हुआ था, and when there the option was given by the government to go home और 1 week दिया गया था, only 5% of the laborers went home, और pandemic बहुत speed से फैल गया था as compared to COVID-19, right? So this is a weakening argument, because इसलिए पता चलता है कि जो author की opinion है that is sort of wrong, because पहले का जो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट का, दैट हैज बीन एग्जैक्टली अपोजिट. ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव टू थिंक. बेसिकली जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा आपका एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए. नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट.
And a lot of us confuse flaw in the argument with weakening argument. Flaw in the argument का ये मतलब होता है that there is something in the argument that is inherently wrong. ठीक है, कुछ ऐसा गलत argument में है जो basically sense ही नहीं बना रहा. Okay, for example, I'll give you another hypothetical example. Say the passage is where author says that he wants to take an exam which is fair, unbiased, जिसमें malpractices नहीं हो सकती, and he is doing NLAT 2020. Okay, so that is a flaw in the argument because it's not possible, right? We saw what NLAT 2020 was. So these are the kind of questions that may be expected and will generally be asked. Third part is the conclusion वाले जो questions होते हैं कि what is the conclusion that the author is trying to draw here. So इसमें भी 4 option होंगे like all the questions. So basically conclusion के लिए क्या होता है, you have to understand कि main theme क्या है पहले तो for every question that you want to answer. उसके बाद में conclusion is generally qualified by the words like therefore, thus, hence. So these are certain words जहाँ पे आप देखोगे तो उस तरह से conclusion बनता है. Other than that, ऑथर की ओपिनियन के बाद जो उसकी फाइनल अप्रोच होती है, बेसिकली जो फाइनल जिस तरह से उसको खत्म करता है वो पैसेज को, दैट इज ऑल्सो समटाइम्स द कंक्लूजन. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज द कंक्लूजन. ओके, सो यू कैन लुक इनटू दैट ऑल्सो, एंड दैट इज लास्ट अ लॉट इन दीज एग्जाम्स. लास्ट पार्ट और द फोर्थ पार्ट ऑफ इट इज assumption वाले क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट वाज द assumption that he was trying to make. और assumption का मतलब हम सबको पता है, समथिंग दैट वी बिलीव टू बी ट्रू. ठीक है, जो पहले से हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये तो सच है ही, इसके बेसिस पर ये आर्ग्यूमेंट दिया है, राइट? सो ये कुछ इजी क्वेश्चंस है assumption वाले जो हमसे पूछे जाते हैं, और ये ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं क्रिएट करते हैं हमारे लिए जनरली. मेन प्रॉब्लम दैट वी फेस इज विद द स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट फ्लॉ एंड सो ऑन, क्वेश्चंस लाइक दिस. Now I tell you as to how to prepare for these questions. Okay, so generally क्या होता है, CLAT और ALET में नहीं पूछे जाते, but LSAT has this tendency of asking really good critical reasoning questions every year. So my advice to you guys will be to solve all the LSAT past year papers. या फिर LSAT के अगर आपने mock test दिए हैं, कोई ऐसी आपके पास book है जिसमें LSAT pattern के questions हैं, solve all those questions. Okay, the only way you can ace critical reasoning is to solve as many questions as possible, because you get a knack of doing those questions. आपको समझ में आने लग जाता है कि उस questions को deal कैसे करना है. Okay, there are certain books on critical reasoning और logical reasoning per se called R.S. अग्रवाल, और इस टाइप की books हैं जो generally लोग use करते हैं critical reasoning के लिए. अगर आपको अच्छे लेवल की क्रिटिकल रीजनिंग यूज करनी है या फिर अपनी स्किल डेवलप करनी है क्रिटिकल रीजनिंग में, यू कैन ट्राई सॉल्विंग कैट के पास्ट ईयर के क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन. देयर आर रियली गुड क्वेश्चन, और कभी कभी वहां से क्वेश्चन क्लैट में भी पूछे गए हैं इन रीसेंट पास्ट. Okay, so that is something that you guys can obviously do to improve your skills in critical reasoning. इसके अलावा a lot of students have mailed me, texted me asking that what should be the ideal score in critical reasoning. Okay, ideal score वैसे it depends on the difficulty level of the question every time, so there cannot be an ideal score. But say if there are 30 to 32 questions, उसमें anything about 20 will be a good score. But if you can score 25 plus, 25 or 25 plus, it's going to be a really good score and can be differential, because critical reasoning generally वही इंसान ठीक कर पाता है जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है. Okay, so this was the controversy wherein a lot of people were saying that under the new pattern, the privileged ones, people जिनकी इंग्लिश अच्छी है, they will be able to do better than other people जो generally are from rural areas and people like this who've not had good schooling from English medium school. But that is the reality here, and critical reasoning actually makes a lot of difference in your end result, and those 5 or 10 marks here and there will make hell lot of a difference. So that's it about critical reasoning from my side. Again, I'll summarize it for you. Understand the main theme of the passage, understand the author's opinion, understand conclusion. First do the question and then move on to the passage, because that is very important. Uske bina you'll waste a lot of time, because time is very important. Time is very crucial factor while doing any question or any paper for that matter for law entrance. So that's it about my side. If you like our sessions, subscribe to our channel, press the bell icon so you don't miss any updates from us. Write all your comments in the comment box. If you have any doubts, you can always mail it to me. I'll be happy to answer all the concerns that you guys might have. All the very best.